And if there are any questions that you want us to get back later as well, we are available online on our personal email IDs and on the group as well. Thank you. Hello everyone, this is Antara. I am a psychologist and I am going to be talking about mental health, children's mental health in this pandemic crisis situation, and how do we deal with their mental health. So, right, like my colleagues talked about physical health, some people talked about exercising, some people talked about taking care of your eyes. It is equally important that we take care of our mind, our children's mind, and how their mental health is currently, as you all must be experiencing, their mental health is also suffering and they are going through a lot in terms of what is happening around them. So let's try to understand what is it that is actually happening around. So starting with the psychosocial challenges. So if you see in terms of children, their life has completely transitioned from being outdoors, playing outside, going to school, meeting their friends, doing activities, to a completely indoor-based environment. And this has led to many challenges such as loss of routine, loss of structure, loss of predictability. Earlier, they had some sort of control over their lives. They had some sort of routine in their lives wherein they would go to school to a particular time, come back home, then maybe play, then come back home, and then other activities. But right now, it's a complete mess. It's very chaotic for them, and there is no predictability, and they have control whatsoever. There is also loss of learning opportunities if you see in terms of taking part in various competitions, maybe in school, taking part in various tournaments, whether it's extracurricular or academic. So there has been loss of learning opportunities, loss of social space in terms of they not being able to occupy those social spaces, they not being able to take advantages or using those social spaces for their development. Loss of peer interaction, although they may be interacting with their peers on calls or video calls, there has certainly been loss of that personal peer interaction, which is also very crucial, and loss of play outside. So now these challenges have resulted in certain emotional and behavioral consequences in children. There have been mood issues wherein children are facing extreme anxiety, fear, hopelessness, and these emotions are then manifesting into behaviors such as anger outbursts, frustration, temper tantrums, inattentiveness, hyperactivity. So what is important is that we address these mood and behavior issues so that our children feel comfortable, they feel a sense of control over their lives, and they feel that all has not gone down the drain, that there is still some hope that things will get better. So then now what do we need to do? We need to make sure that these emotional or behavioral issues do not affect their development. So what is the impact on their development that takes place? Firstly, we need to understand that every child has a developmental trajectory that follows. Okay, so there are age-appropriate developmental achievements or milestones, and every child needs to achieve those milestones at that particular age. So now these developmental achievements or milestones may include motor skills such as basic motor skills like walking, running, to higher order motor skills, language skills, development of language, acquiring vocabulary, understanding the grammatics, forming sentences, visual and auditory skills. Okay, so visual perceptual skills, being able to organize in spatial information, cognitive skills. So cognitive skills may include attentional skills or executive functioning skills, planning skills, memory skills. So it is important that these developmental trajectories stay online and there is no break or there is no gap in between these trajectories. So it should be continuous, the flow should be continuous and it should not get stopped, or it should not have a break in between. So another important factor is social skills in terms of development. So just like I mentioned earlier, there has been loss of social spaces, but there has also been loss of what we call social skills. How? When a child goes out, interacts whether with peers, with teachers, with relatives, with friends around the colony, they learn very important social skills of communication, negotiation, team efforts,
cooperation, and these social skills are extremely important for the development of any child. So with staying indoors, with lockdowns and restrictions, and not being able to go outside and play with friends have definitely resulted in the loss of this interaction. So now what we can do with our limited resources is that we need to make sure that they stay connected, even though they are socially isolated, socially distanced, but they should not lose the connection that they have with their friends, with their peers, with their relatives. So it's important that you keep video calling them, have video calls with their peers, with their relatives, your relatives. You make them discuss various topics with their friends. So what we are trying to do here is build social connections, trying to make them be social and develop social skills, which are extremely important for their development. And when we do all these skills, when we build on all these skills, when we try to continue their skill development and developmental achievements, whether it's motor skills, it's language skills, social skills, we are ultimately trying to help them grow their personality, right? And personality contains physical development as well as mental development. Now, physical development, we all know what can be done about it, but it's extremely important that we also focus on mental development. Okay? So that includes all the skills that I have mentioned above, right? When they develop all these skills as they're growing older. Okay, so these are the formative years in which it is very important that we focus on these skills, because in these formative years, whatever they're hearing, whatever they're seeing, whatever they're reading, it's a curious mind that they have, and whatever they're learning, and they are very perceptual in these times. So whatever they're perceiving, they are learning, and they will remember this. So it is very important that we have the right kind of information for them, right kind of resources and stimuli for them to learn from, okay, for their overall physical and mental development. So what can we do? Physical development, exercises, movements, whether it's free movements or it's dance or it's yoga, exercise. For their mental development, you can engage them in activities such as storytelling, letter writing. So it's their motor skills which are developing, it's their auditory skills which are developing, it's their language skills which are developing. You can make them help in your household chores. Okay, they will learn a lot from them as well. Okay, gardening can be a good exercise. So it's very important that they learn that apart from them, they should be able to nurture some other, whether it's a plant or a pet. So you can engage them in gardening as well, right? Lastly, what are the interventions? If you feel that the child is experiencing anxiety or experiencing distress, okay, there are certain interventions that you can do. Firstly, we need to understand that from where are these mood issues, whether it's anxiety, fear, or hopelessness, from where are these issues coming on? Okay, it's one of the major important reason or cause is their lack of knowledge. So they have a lot of questions in their minds. In general, they are curious beings, like mind is curious. But right now, it's so much going on around us. They have a lot of questions in their minds. What is exactly going on around us? Why are we stuck inside our homes? Why can't I meet my friends? Why can't I go out to play? Why can't I go to school? So all of these questions are really bothering them. They are harassing them. And that's the reason that the anxiety is increasing by the day. So firstly, what you need to remember is that we need to answer their queries. We need to respond to their questions, whatever they have in their mind. But we should always remember that we need to answer their queries in an age-appropriate manner. So the information, the kind of information we give should be complete, because incomplete information will again lead to more questions and more anxiety. So complete information, age-appropriate information, and uncomplicated in very simple terms. Okay, so for example, if we have to explain them the do's and don'ts of COVID protocol, here is just an example which I've put up. So this is like the germ theory, which is very popular with children. So you explain them in terms of how there's one germ and how it spreads and it makes people sick, and what we need to do so that people don't fall sick. Okay, so what are the things we need to take care of? For example, washing hands, staying away from people, etc., etc. So we need to remember a few things, that we need to tell them the truth and fact. Okay, we do not need to lie to them, but we need to do that along with
hope and reassurance that things will get better. So we don't need to give them any false hopes. Okay, when things are really bad around us, we can tell them that yes, right now the situation is bad, but there is still hope, and what we can do from our side to not make the situation worse. Right? So this is what we can do. Firstly, answering their queries, responding to their queries. Secondly, it is very important that we maintain a routine. So maintenance of routine is very important, and this routine needs to be a balanced routine. So I've put up a picture here, as you can see. So you can, this is just an example. You can devise your own routines according to your own maybe activities, your own family members, and you all can decide and devise a new routine for yourselves, for your entire family, in fact. So here you can see that from 7 to 9 a.m. the child is waking up and basically freshening up, bathing, whatever is first activities, daily activities. Then the child is sitting down to study. Maybe that's the screen time that the child will have to engage in. Then from 1 to 2, there is lunch time. From 2 to 4, there's extracurricular activities which the child can engage in. Right? From 4 to 6 p.m. there can be either the child eats something, the child engages in snacking, or the child can engage in some activities, whether it's helping in your household chores, or whether it's doing some gardening, some other interesting hobbies that the child is interested in. Then from 6 to 8 p.m. again, there can be a family time involved. So it's also very important that you all have family time, wherein there are certain activities where all of you are involved, you take part, and you engage with each other, whether it's board games or it's any other activity, fun activities, it's playing cards. Okay, from 8 to 9, that can be the dinner time, and at 9 p.m. can be the bedtime. So basically, our aim is to keep them gainfully occupied, meaning they should be able to gain something from each activity they do and keep themselves engaged all day long. So the less mind space they have, the less they will worry about the virus and the disease. Okay, so if they're experiencing extremely high amounts of anxiety, so this is all. Yeah, firstly, we need to remember that you need to limit your exposure to the news. Okay, so avoid conversation about pandemic around them, because that can often lead to incomplete pieces of information being perceived by them, and then they trying to make sense of information, they not being able to process the information, and ultimately leading to anxiety. All right, so yoga, deep breathing, these are the just steps which you can follow for deep breathing. So you need to explain them that why are we doing these activities, whether it's yoga, it's deep breathing, it's exercises. Always explain them what is the purpose of that activity. Try to take part with them in that activity. Then take feedback. Ask them, how did you feel after that activity? So once they understand that they do feel calm, they do feel good about it, they will engage in it on their own. These are also some of the activities that you can do with them to decrease their anxiety. Guided imagery is a technique wherein you can, it's a type of a daydreaming wherein you tell them to imagine a favorite place of theirs and a favorite person. You tell them to imagine, go to that place with that person. Describe how you feel. So it's a very detailed activity right now. There is shortage of time, so I can't really explain in detail, but it's a very detailed activity wherein you tell them each and everything, that you go into this place, you see these things around you, how do you feel, how do you sense their touch, how do you sense their smell. So you basically ask them to go on this imaginary journey with their favorite person, and they can always go there to that journey at times of anxiety as an escape tool to lower their worries. Another technique you can use is these 3 things of accomplishment. So whenever they feel overwhelmed, or whenever they feel that they cannot do anything, or they feel like a failure, you can ask them to write down 3 things they did well in recent months. Okay, so they feel a sense of contentment, they feel a sense of achievement, and they actually can think about the things that they did well. Okay, whether it's learning a new hobby, or whether it's starting something new, it's getting to learn some new activity, whatever it is. Another activity can be this letter to coronavirus. This is also a letter. It can help them actually write down their emotions. Often when we express our emotions in the form of writing on a paper, they're able to identify them, they're able to actually deal with them in a better manner. So these are the 3 things that you can ask them to do. That what things are difficult, what were the good time spent, and the things I have learned. And lastly, I would just like to end this with a note that
These are some of the techniques that you can do at home to reduce their anxiety or to manage their mental health and mood and emotions and behavior. But if you feel that their emotions are really getting out of control, or you are not able to deal with their emotions or their behavior, it is always advisable and wiser to take professional help, take professional opinion. And my colleague will be talking about that after me. So with this, I end my note. Thank you so much. Thanks a lot, Andra. I think that was a superb talk on how we can involve children in this difficult journey together, how we can ask them to write letters to coronavirus. I think that was a fantastic idea. So we move on to Rupesh now. Dr. Rupesh, an old friend of ours, is a born psychiatrist, I must say. If you just meet him for 5 minutes, it is a mood elevating phenomenon. So over to Rupesh now to guide people on mental health in this difficult time. Thanks, Rupesh. Thanks, Sonal, for this wonderful start and introduction. Yeah, this is Dr. Rupesh. I'm a consultant psychiatrist. Currently, I am working with Columbia Asia Hospital, Patiala. And my child experience hails from the Best Child Institute in Mumbai, one of the best child institutes, I would say, not to create some complications. BYL Nair Hospital. Yeah. So let's go ahead. So to start with, I'm gonna increase the tempo of this talk by talking the worst things first and then gradually settle it down with the need of the hour. So the things which you want to see is one, breaking the bad news, then red flags, some psychopharmacology, and then the need of the hour. Now, what is this that we are talking about, that breaking the bad news? As my colleague Anta has already, given a very good explanation, how do we tell things about coronavirus? How do we make children simple and make them accept the do's and don'ts of coronavirus? But it is very important need of the hour as per the coronavirus waves, which have been, the first wave, and now the incoming of second wave has brought in the situation wherein the complications and the mortality has been increased. Coronavirus 2 के वेव में मौत डेथ रेट्स बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, हर घर में जहाँ बच्चे अवेलेबल है, आसपास में नेबरहुड में कोई ना कोई डेथ सुनते हैं. फिर हमने ये समझना है कि डेथ एंड द डिफिकल्ट टाइम्स जो हमारे लाइफ में चलते हैं, all these things have long-term implications in our behavior, our anxieties and our way to handle things. So जब ये एक सिचुएशन से हमारे ये बच्चे सारे निकल रहे हैं, it is very important to see and give them both the bad side in a very crystal clear way and the outcoming with a hope and reassurance, as Antara has already told about the corona pandemic. So the same thing applies with the breaking the bad news, कि जब कोई बुरा हादसा एक परिवार में होता है, किसी के देहांत से, बच्चों को बहुत जरूरी है कि वो एक्सेप्ट करवाए. तो ये जरूरत क्यों है, हम क्यों बात करें इस वक्त इसके बारे में, कि क्योंकि डेथ्स बहुत हो रहे हैं और काफी बार क्या होता है, कोविड में सोशल आइसोलेशन एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस के कारण काफी डेथ्स बहुत ट्रबलसम होते हैं फैमिलीज के लिए, कि वो उनका हैंडलिंग कैसे करे, उसको कैसे उनके सारे फ्यूनरल्स प्रोसेस कंटिन्यू करे विदाउट सोशल मच ऑफ हेल्प. तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम स्कोप मिल रहा है कि उस परिवार के किसी बच्चे पे ध्यान दिया जाए कि वो बच्चे से डील कैसे कर रहे हैं. एंड काफी हद तक दूसरे हमारे बैरियर्स हैं कि नहीं, बच्चों को ऐसी चीजें नहीं बताया जाता, उनको स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, नहीं बच्चे नहीं समझते. ये हमारी धारणाएं हैं. बच्चों के लिए हमारे चश्मा पहन रखा है जो हम चाहते हैं कि बच्चे दूर रहे. लेकिन अगर इस कठिन परिस्थिति में अगर हम बच्चों को इस परिस्थिति का अवेयरनेस अच्छी तरीके से नहीं करवाएंगे, जिस तरह से वो ले पाए, तो आगे भी उनको ये चीजें दिक्कत कर सकती है. तो इस चीज को सिंपल करने के लिए हमें एक सच्चा इंफॉर्मेशन देना, जैसा अंतरा ने कहा, और एज अप्रोप्रिएट स्टोरीज के तौर पे हम बता सकते हैं, और इलनेस सिवियरिटी समझाने के लिए सिंपल सिकनेस वर्सेस बिग सिकनेस, लाइक छोटी बीमारी और बड़ी बीमारी. जैसे हमें सिंपल सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, जब घर में हम आइसोलेट हो रहे हैं, यानी ये छोटी बीमारी हो रही है. पर जैसे ही किसी की बीमारी घर में संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो बच्चों को हम जो भी परिवार में मेंबर्स घर पर हैं,
वो थोड़ा इसकी सेंसिटिव कर सकते हैं कि अब बीमारी थोड़ी बड़ी होने के कारण हमें ये घर के मेंबर को, बल्कि उनके माता पिता हो या दादा दादू नाना नानू हो, जिनको हमें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा है। फिर जैसे भी अस्पतालों में उनकी प्रोग्रेस हो रही है, कंडीशंस के बारे में काफी वक्त, एक्चुअली अच्छे प्रोग्नोसिस आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, हमें बच्चों को अवेयर कराना जरूरी है। लेकिन साथ ही में हम एक चीजें निगेट नहीं कर सकते कि मोर्टेलिटी रेट कोरोना वायरस वेव 2 में ज्यादा होने के कारण सारे ही आउटकम्स हॉस्पिटल के सही नहीं आ रहे। ऑलमोस्ट जो भी डेथ रेट बढ़ा हुआ है, तो बच्चों को धीरे धीरे अगर जैसे भी डे टू डे लेवल पे अगर उनके माता पिता कह लो या जो भी नियर डियर वंस हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी जो स्टेटस है पूरी तरह नहीं तो भी वो ग्रेजुअली डिटोरिएट हो रही है। ये छोटे छोटे शब्दों में जो बच्चे जैसे कि 6 साल के नीचे या 6 साल से 12 साल इज अ बेटर एज, और 12 साल के ऊपर टीनेजर्स आर वेरी वेल विद अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, बट उनके एज के हिसाब से हमने वो छोटी इंफॉर्मेशन उनको समझाना बहुत जरूरी है। अभी मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये एक लाइव सिचुएशन है जो मैंने आगे कभी काउंसलिंग भी करने की कोशिश की है इन बच्चों को, आगे मेरे फ्रेंड्स के आगे फैमिली में है, जिसमें एक बच्चा, उनके दोनों पेरेंट्स कोविड से ग्रस्त थे। कोविड से ग्रस्त होने के कारण कुछ दिनों बाद उनको घर से हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। तो इस वक्त क्या हो गया कि घर में जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि बच्चे मम्मी डैडी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, वर्क काम से जा रहे हैं। उन्होंने ये क्लियर नहीं किया बच्चे को कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, जब तक वो पेरेंट्स चलो बीमार भी थे, आइसोलेट भी थे, वो दिन में 2 या 3 बार बच्चे से वीडियो कॉल कर लिया, बातचीत कर लिया, घर के ही अंदर दरवाजे के अक्रॉस कुछ बात कर लिया, तो बच्चा कुछ ना कुछ रीअश्योर हो रहा था कि मेरे पेरेंट्स आसपास है, और जो प्यार उनका वार्मथ वो पा रहा था। लेकिन अचानक से जब वो वार्मथ गायब हो गया और जब पेरेंट्स हॉस्पिटल में थे, when they couldn't have that constant video call or the reassurance from the parent side, बच्चे को एक अचानक से वैक्यूम हो गया, जहां से बच्चे को लग रहा है अरे मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, वो ऐसे कौन से बिजनेस ट्रिप पे गए हैं जहां वो मुझसे बात नहीं कर रहे, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मैंने कुछ गलत किया है क्या, क्या मैंने कुछ हरकतें ऐसी करी है जो मैंने बदलनी चाहिए। तो एक गिल्ट कह लो, ये एंजाइटी कह लो, या एक इनसिक्योर वाली फीलिंग इस एज में जो बच्चों को जनरली हम अवॉइड करवाने की कोशिश करते हैं, वो धीरे 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 सिंक इन हो गया था इस केस में। और अनफॉर्चुनेटली आई वुड से दीज बोथ द पेरेंट्स couldn't fight back the COVID, and they lost this fight and they succumbed in form of death. Now it was a challenge for these grandparents to convince this child where the parents have gone, because they are not going to come back. तो अगर इस जगह पर पेरेंट्स के साथ जब वो बीमार थे और सही तरीके से ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन एज अप्रोप्रिएट टेक्निक्स के साथ अगर दिया जाता, तो ये जो चैलेंज उनको महसूस हुआ इस बच्चे को समझाने के लिए, ये नहीं होता। सो दैट्स व्हाई आई विल जस्ट कीप इट शॉर्ट। ये एग्जाम्पल ने काफी कुछ कन्वे कर दिया होगा कि बच्चों के मानसिकता को अगर हमने बेटर तौर पे हैंडल करना, उनको सिखाना है, तो हमने सच्चाई उनको बतानी पड़ेगी उस एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन के साथ, और उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चंस पूछे। जैसे कि हमारे यहाँ पे एज वाइज अगर फॉर एग्जांपल दूं, तो काफी बार पे बताया जाता है कि कोई अगर गुजर गए हैं तो वो भगवान के पास चले गए हैं या सितारा बन के गए हैं। तो देखो बच्चे के पास कुछ ना कुछ एटलीस्ट जैसे उनको अवेयर है, जो एक धक्का सा नहीं लगा है, या वो धक्का लगने से पहले उनके अपने खुद के इनसिक्योर फीलिंग्स या इमोशंस घर नहीं कर गई है मन के अंदर, वो धीरे से सही तौर से उसको एक्सप्रेस करना सीख जाता है कि हाँ चलो। तो इट कैन बी वॉट एवर कल्चरली सोशली एंड द चाइल्ड एक्सेप्ट इट। तो एंड इट इज नॉट एक्सेप्टिंग, वो पूछे प्रश्न जिसको हम आंसर्स करें। एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द सेम टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द चाइल्ड होप कि उसके साथ उसका परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली पास है, और हम उस बच्चे को इस परिस्थिति से या लैक ऑफ अफेक्शन या वार्मथ से निकाल कर रीश्योर कर उन्हें दोबारा सिक्योर फील कराना बहुत जरूरी है। पर ये जो मैंने जो एग्जांपल दिया था, इट वाज मिस अनफॉर्चुनेट फॉर द चाइल्ड, एंड इट एंडेड अप इनटू अ ग्रीफ काउंसलिंग जो मेरे साथ हुआ उनका। एंड हमारे मैं कहूँ या कोई साइकोलॉजिस्ट कहे,
या कोई साइकियाट्रिस्ट इन जनरल जो बच्चों के स्पेशलिस्ट नहीं भी हो, पर आज के दौर पे हर साइकियाट्रिस्ट, हर साइकोलॉजिस्ट हैव बीन डूइंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ गुड जॉब by talking and giving the right ways and the different kind of ways which can. अंतरा ने कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताए हैं। ग्रीफ काउंसलिंग में हम कुछ स्पेसिफिक चीजें करते हैं, जैसे कि व्हाट फीलिंग्स दे हैव, ड्राइंग्स के थ्रू कह लो या क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे कि सेंटेंसेस हम इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं कि कोरोना के कारण डैश कर दिया, तो बच्चा अपने मानसिक क्वेश्चंस रेज कर पाता है इन टेक्निक्स के थ्रू, एंड हम धीरे 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 ही क्यों ना हो उसको डील करने की कोशिश जरूर करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। So because of this, that the stress due to the bad news, or it may be the corona itself initially, which Antara discussed, but the children are being having emotional and behavioral issues. So what red flags can we watch for? अगर मुझे पूछा जाए तो crying spells and the child constantly giving up, helplessness और hopelessness कि नहीं हम ठीक नहीं हो पाएंगे, नहीं सिचुएशन नहीं बदलेगा, नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, एक ये। उसके अलावा वो चिड़चिड़ा है, परसिस्टेंटली इरिटेबल ऑन ट्रिवियल इश्यूज, बिना कोई कारण के चिड़चिड़ाना, गुस्सा, चीजें फेंक देना, टेम्पर टैंट्रम्स, बहुत अकेला अकेला रहता है, उसको जो पसंद है उन चीजों में भी एक्टिविटी नहीं रखता, फैमिली मेंबर से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, फ्रेंड्स से बात करने पे इंटरेस्ट नहीं है। उसके अलावा नींद और खाने में सिग्निफिकेंट चेंजेस, इट कैन बी मोर और लेस, ज्यादा भूख लग रही है, कम भूख लग रही है, ज्यादा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बट दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स। रिग्रेस्ड बिहेवियर इन फॉर्म ऑफ जैसे थम सकिंग, जैसे काफी छोटे बचपन में थम सकिंग होता था, बट आगे वो थम सकिंग छूट जाता है, लेकिन अब चलते हुए इस पीरियड में अचानक से थम सकिंग आ गया। बेड वेटिंग, शुरुआत में जैसे बेड वेटिंग का कंट्रोल आने के बाद बच्चे जनरली बेड वेट नहीं करते, पर अगर ये बेड वेटिंग बार बार हो रहा है, द चाइल्ड इज हैविंग बैड ड्रीम्स, फ्लैशेस, जो डरावने सपने देख के उठ जाता है, so all these kinds of symptoms need to be understood as the red flags. But the first thing which I wrote was self harm, and now I would like to talk about, see, self harm मैंने पहले क्यों लिखा है, it is very important to see। काफी बार हम वो देखते नहीं है, हम उसे निगेट कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो तो सिर्फ बोल रहा है, वो कुछ करेगा नहीं, वो डरा रहा है। बट प्लीज गाइज बी सेंसिटिव for any ideation of self-harm, any vocalization of self-harm, or if any failed attempt of self-harm, everything has to be considered and referred to the respective psychologist or psychiatrist, whoever is near and at the available at the earliest. Just moving ahead, see, being a psychiatrist, I need to talk on this and I need to clear your misconceptions. देखिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दवाइयों के बारे में बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन जरूर एक डिस्क्लेमर दूंगा कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास गए हो यानी वो दवाइयाँ शुरू करने वाले हैं, या एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो तो वो आगे आपको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करके दवाइयाँ शुरू करवाने वाले हैं, ऐसा नहीं होता। Psychologists and psychiatrists are trained professionals wherein see जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी बिगड़ी हुई है, जिसको हम सेट करने के लिए उनके पास गए हैं, वो इक्विप्ड है, ट्रेंड है कि इस सिचुएशन की गंभीरता समझे। अगर शुरुआत में काउंसलिंग एक्टिविटीज या टेक्निक्स के बाकी और जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स के द्वारा अगर वो आपको हेल्प कर सकें तो वो जरूर करेंगे, पर इट इज देयर कॉल, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन, दे आर ट्रेन्ड इनटू इट। कि कभी भी उन्हें लगा कि कोई भी एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिसिन उनको शुरू करनी हो, प्लीज डोंट हेजिटेट। उनको साइड इफेक्ट्स भी होंगे, देखो 100 में से 2 लोगों को या 1 लोगों को तो साइड इफेक्ट्स हर ट्रायल में या प्लेसिबो से भी डॉक्यूमेंट किया गया है कि सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट कि नहीं कुछ नहीं, साइड इफेक्ट्स ज्यादा होंगे तो नहीं हमें दवाइयां नहीं लेनी है। मैं कह रहा हूँ आम लोग ही नहीं, डॉक्टर्स, मेरे कॉलीग्स को मुझे समझाना पड़ता है, बच्चे हैं तो क्या हुआ डियर, देखो वो अब जिस परिस्थिति में है उस लेवल के लिए उस एज अप्रोप्रिएट डोज हमें शुरू करनी पड़ सकती है, और साइड इफेक्ट्स मॉनिटर करने के लिए हम और आप दोनों ही अवेलेबल है। सो इट विल नॉट बी अ ट्रबलसम थिंग, प्लीज डोंट हेजिटेट। बच्चे को मौका दो कि वो जल्द से जल्द अपने आप को ठीक करे। अभी मैं दूसरा एक मैंने मेंशन किया स्लाइड्स पे, वो है एंटी साइकोटिक मेडिसिन। बहुत सी दवाइयां हैं जो बहुत हल्के डोज में एंजाइटी इश्यूज को हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हैं, स्टबर्ननेस को हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हैं, या बच्चे घर में रह रहकर जो बहुत इरिटेबल हो गए हैं और पेरेंट्स से नहीं संभल रहे हैं,
तो ऐसे टाइम में अगर आप ऑनलाइन ढूंढने जाओगे तो ये मेडिसिन आएंगे एंटी साइकोटिक मेडिसिन में, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकेट्रिस्ट इज नॉट थिंकिंग दैट योर चाइल्ड इज अ साइकोटिक, ओके, वो पागल नहीं है, पर बहुत सी दवाइयां हैं जिनकी डोसेस के हिसाब से असर आते हैं, तो लो डोजेस में एंटी साइकोटिक मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर साइकियाट्रिस्ट फॉर दिस। एंड हर साइकियाट्रिस्ट या और जो स्पेशली मेरे जैसा कोई चाइल्ड एंड एडोलेसेंट में ट्रेन साइकियाट्रिस्ट है, दे मेक इट अ पॉइंट टू स्टार्ट लो एंड गो स्लो विद द डोसेज ऑफ द मेडिसिन। और हर दवाई स्लीपिंग पिल नहीं होती, सो दवाइयां शुरू करने से पहले संकोच ना करें। You can have your question, sit across with your psychiatrist, discuss all the pros and cons, and watch for them instead of not giving the benefit of doubt to your child. And the need of the hour, which I said, as every person on this podium has told you, one thing is routine. तो खाने से लेकर, एक्टिविटी से लेकर, फिजिकल हेल्थ से लेकर, डे रूटीनिंग से लेकर, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए जो रूटीनिंग जरूरी है, आई वुड से ये सारी चीजें जोड़कर जो एक डे का रूटीन बनेगा, ये बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए। अभी मैं हर बच्चे के साथ एक थोड़ा टाइम लेके बताना चाहूंगा एंड टॉक अबाउट स्पेशल चिल्ड्रन। सी, स्पेशल चिल्ड्रन में बी ADHD, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट, जिनकी बुद्धिमत्ता थोड़ी कम होती है। सी, एवरी पर्सन या every child may be special, may be different, but if you are helping that child to go this transformation from the previous routine to the current new routine, these special children will adapt to it with help. And when now they have continued this adaptation following this routine, I would give just a thought, food for thought, कि हम तैयार भी रहे कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा या ये कोरोना पैंडेमिक कम होगा, हमें दोबारा एफर्ट लेना पड़ेगा कि ये जो चेंज रूटीन को हमारे प्रीवियस रूटीन में ले जाने के लिए हमें उन बच्चों को वक्त देना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम से लेकर बाकी स्कूल एक्टिविटीज पे शिफ्ट होने के लिए उनको वक्त लगेगा। प्लीज गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। सो जस्ट आई वुड लाइक टू एंड अप विथ वन कमेंट। जैसे सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट देखा था कि दोनों पेरेंट्स गुजरने के बाद 2 बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, वुड एनीवन अडॉप्ट देम? सी, दिस आर ऑल ट्रैप्स। हमने ये रास्ते नहीं पकड़ने हैं। सोशल मीडिया ये अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसे सब चीजें डिस्कस करने के लिए, या अगर आप किसी को अडॉप्ट भी करना चाहते हो, so CARA is CARA is an Indian guidelines or is a main institute which is looking after adoptions. So please don't get lewd or emotional onto this post, contact these people, you know, or go for adoption. क्योंकि क्या है कि ये illegal adoption बहुत से तरीकों का रास्ता बन सकता है जिसमें बच्चों को गलत जरिए पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर में डाला जा सकता है। So just as a caution, I would just like to say, go for the best legal ways to help out our community by going foster care versus adoption. Thank you for your time, guys. I really appreciate. I'm a psychiatrist. I can totally understand the time you have been giving us. It has been long, almost 2 hours talk. We all consultants have been talking. But for any questions, we are open. Here is my number wherein you can message, or my email ID where you can drop in your queries. So please be relaxed. We, Dr. Fraternity, have been working as a frontline workers, and one of the frontline workers, let me specify, because हमारे अलावा बहुत लोग हैं, but we still हमारी रीढ़ टूटी नहीं है। हम अभी भी मोटिवेटेड हैं, हम आपके साथ हैं, आपके बच्चों के लिए और आपके लिए। Please come back to us with any questions or queries. Sonal, giving up to up to you. Thanks a lot, Rupesh. Your talk had many important points, and a few of them were really thought-provoking, including the legal ways in which people can trap us now, showing these foster care ads or messages on social media. So there's lots of reasons why parents would like to get back to you, but